in Amritsar, Jallianwala Bagh में Hindus, Muslims and Sikhs were uniting to celebrate Ram Navami together. ऐसे भी कहा गया था कि अगर आप नहीं डेसिमेट हो गए तो आप भी गिराए जा सकते हैं। इंक्वायरीज हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि क्लोज टू 1800 और 1900 और बुलेट्स दे फायर। It is crying shame. वो सोल्जर्स जो थे वो मोस्टली गुरखा सोल्जर्स। अगर आप देखोगे भी इंटरनेट पर हॉरिबल पिक्चर्स कि लोग यहाँ से वहाँ तक जाना चाहते हैं and they are being made to crawl on their bellies. ये जो फायरिंग थी वो कितने मिनट्स या कितने टाइम तक चली? 11 से लेकर 15 मिनट। लोग अपने आप को बचाने के लिए बेसिकली क्या क्या कर रहे थे? भाग रहे थे, भीड़ लग गई थी। My purpose was to inflict fear among the people of Punjab, to teach them a lesson that they wouldn't forget. ये उधम सिंह कहते हैं कि he was one of the survivors. Hi, Renita, and welcome to Expert Talk with Bhavya Desai. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और वो है जलियांवाला बाग। बिकॉज जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जो जिसने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे। ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट एज वेल। इंडिया की जो इतनी लंबी हिस्ट्री है उसमें, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझे ऐसे लगता है कि जो मिलीनियल्स हैं, जो जेन अल्फा है, एंड स्पेशली जो जनरेशन्स टू कम, उनको इस चीज़ के बारे में पता चलना आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स में इसका रेफरेंस दिया गया है, बट इतने डिटेल में शायद नहीं दिया गया होगा जिस डिटेल में किसी भी इंडियन या भारतीय को पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भव्या, क्योंकि ये अपनी स्वतंत्रता मूवमेंट जो है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इसके बारे में इसकी जानकारी तो सभी लोगों को मालूम है। Right. और इसकी चर्चा तो हम सभी करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जलियांवाला बाग हत्या जो हुई 1919 में, क्योंकि वो दुर्घटना जो हुई, that was the start. It was the one single incident that spurred the independence movement. और ये बात जो है ज़्यादातर लोग को मालूम ही नहीं है। Certainly not Gen Zs और अभी के generation. Right. इंटरेस्टिंग। सो बहुत सारी चीज़ें डिसाइफर करेंगे, मतलब क्या हुआ वो दिन पे, एंड इंसिडेंट क्या था, उसके बाद में क्या हुआ, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो सबसे पहले मतलब कि जलियांवाला बाग जो है बेसिकली वहाँ पे क्राउड वो दिन पे क्यों असेंबल हुआ था 1919 पे? एक्चुअली ऐसे है कि अप्रैल 13 अप्रैल 13 को उस दिन वैसाखी के दिन थी। Right. सो वैसाखी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर द नॉर्दर्न इंडियंस। पंजाबी लोग नॉर्दर्न इंडियंस जो आप बोल सकते हैं। और ये रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, but it is an agricultural festival, right? It really marks the springtime. तो उस दिन पर हर साल मतलब लोग इकट्ठे होते हैं उसी बाग में, एक्चुअली जगह जगह में, बट इन अमृतसर जलियांवाला बाग में हिस्टोरिकली, ओके, टू सेलिब्रेट द स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये है एक चीज़। दूसरी बात ये है कि स्प्रिंग फेस्टिवल वैसाखी के अलावा वहाँ उस दिन एक बहुत ही बड़ा हॉर्स एंड कैटल फेयर हो रहा था। तो हॉर्स एंड कैटल फेयर में पीपल आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग, मतलब इट्स अ ट्रेडिंग फेयर। So अभी हॉर्स एंड कैटल ओनर्स आर कमिंग फ्रॉम अदर प्रोविंसेस एज वेल। राजस्थान, was not Uttar Pradesh at that point, but that part of the region, सभी आ रहे थे अमृतसर को और वहां इकट्ठे हो रहे थे आउटसाइड ऑफ जलियांवाला बाग ऑल्सो। ये है दूसरी बात। और तीसरी चीज यही है कि एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज द लोकल कांग्रेस had just about begun to take effect. और वहाँ दो लोकल कांग्रेस लीडर्स थे, सैफुद्दीन खिचलू
and Dr. Satyapal. Hmm. And they had begun to talk about the idea of home rule. Hmm. और एक बहुत बुरा मतलब एक्ट था, the Rowlatt Act, which was an anti-sedition law preventing people from gathering and more importantly giving the British government the license to arrest people at will. Okay. So there was a lot of conversation by these local Congress leaders about this act and how do we protest it through Gandhi ji's Satyagraha movement. In fact, that particular unique aspect of the Satyagraha movement came to be known as Rowlatt Satyagraha. Oh. So there was a meeting also being planned in the Bagh that day to talk about this at about 4 or 4:30 p.m. Okay. तो इन तीनों चीजों के कारण लोग वहां उस दिन इकट्ठे हो रहे थे. राइट. सो मतलब जो डांडी मार्च जो ओरिजिनली था, सो वो डांडी मार्च भी बेसिकली राउलेट एक्ट के अगेंस्ट ही था. दैट वाज द रीजन. Related. Okay. बिल्कुल. So Satyagraha movement in general, जी. Gandhi ji was calling for strikes, Satyagraha, actually all over the country. Right. Now the Rowlatt Act was also known as the Black Act, and the Rowlatt Bill was established in January of that year, and jaldi hi uske baad it became law. It was called the Rowlatt Act because it was drafted by Sir Sidney Rowlatt, Okay. of the British government. But ye kya thi? It was actually, before that, there was an act called DORA, Defense of Indian Regulations Act, which was post World War I, post the Great War. Us waqt to bulate the Great War. Right. It was to prevent revolutionary activities. Okay. Okay. So again, there were a number of things, lekin, you know, 4 लोगों से ज़्यादा, you know, you cannot gather at a corner. जैसे अभी का कर्फ्यू होता है वैसे टाइप्स का. Anything that you say can be held against you if it is deemed to be terrorism. Got it. Revolutionary. Essentially. And you can be arrested at will without any further questioning and sort of be interned immediately. Right. So Dandi marches were happening against this. Satyagraha was happening against this. But because of this and sort of stemming from this, right. You could say, काफी सारे मतलब incidences, छोटे-छोटे incidences हो रहे थे अमृतसर में लगभग 30 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक. Okay, मतलब 2 हफ्ते पहले से. 2 हफ्ते पहले से. क्या हुआ था? कैसे इंसिडेंट्स है ये? तो पहले there was a हड़ताल, an all India हड़ताल called for on 30th of March. Okay. तो वो दिल्ली में भी हुई, अमृतसर में भी हुई, other places में also हुई. In Delhi, there was, it had broken out into not riots, but basically there were firing, civilians were harmed and police were also harmed. Amritsar में ऐसे नहीं हुआ. So in Amritsar, it was considered a very successful hartal. However, this then incited them to have another hartal on the 6th of April. Okay. Now, जैसे ये हो रहे थे, the local government, it was Deputy Commissioner Miles Irving, he was in charge, and he especially was becoming very insecure about this. Because even though these are peaceful protests, the truth of the matter is that they could incite violent activity. Okay. Okay. And this is a bit of a double-edged sword Britishers के लिए, क्योंकि on one hand nobody wants violent activity. Right. But the British have no reason to issue an arrest warrant if in fact it is peaceful. So if there is the slightest bit of violence, then chalo, ho gaya, we will arrest you. Right. So this is why I say it's a bit of a double-edged sword. So itne mein, there were processions as part of the protests. On the, I think the 9th or the 10th of April, there was a Ram Navami festival. So there was a Ram Navami procession that was to take place in the city of Amritsar. And after a long time, pehli baar, Hindus, Muslims and Sikhs were uniting to celebrate Ram Navami together. Oh. All 3 religions, even though it's a Hindu festival. And
साथ ही साथ they were marching, they were holding cups, drinking from the same cup as a show of solidarity to unnerve the local British government, and they were getting unnerved. So they started issuing again these orders ke no more processions. You can't have any more processions. Right. So what happened the next day, 10th of April, kafi khatarnak. There was a lot of again chote mote incidences and violence broke out. So British banks were looted, British banks were burned. There was a Mr. Pinto who was a worker in the telegraph office. उनको मतलब locals ने drag किया गया from his house and he was beaten up. Now why? He was actually Anglo-Indian. He was not even British, but there was this anti-British sentiment. तो ये सब हो रहा था. The Tongawallas in the city suddenly started to refuse to take any Britisher in their Tonga. Wow. Things like this. तो अभी ये जब ये चीजें हुई तो the British were getting quite upset, and then they came in and there was some Dundee activity. Okay. There was some beating up of people. Again, violence broke out. उसके बाद they issued a curfew the next day, not even an exact curfew, लेकिन उन्होंने कहा कि no gatherings, no processions at all. Now, naturally, what had happened the day before with these banks being burned and looted, and there were several incidences. There was one Mr. Kamra from one of the banks who saved some British people, so he was getting flack from the locals कि क्यों उनको बचाया. This kind of thing was happening. So the British said, now no gatherings. But some people had died. Right. So funerals had to take place. So 10th, 11th, the next day, funerals had to take place. But Miles Irving ne kaha कि there will be no gatherings. Okay. So how do you, apne Sanskriti mein, how do you have these funerals? The processions, funeral processions are a big part of it for all of the religions. Right. लेकिन इन्होंने, and one very important thing is that the cremation grounds as well as the burial grounds take place outside or exist outside of the walled city of Amritsar. Okay. Now what Miles Irving did was he said, okay, आप लोग सब जाइए, go and do your funerals, but you have to be home by 2 o'clock. I'm going to issue a bugle call at 2 o'clock, knowing full well कि you've got these three different communities. Sikh लोगों के लिए भी after the cremation there's a whole series of मतलब prayers ardas वगैरह in the गुरुद्वारे में in the Golden Temple. There's no way you can finish all of this and be home by 2 o'clock. But the British were aware of this कि ये लोग बाहर जाएंगे outside of the city funerals करने के लिए, फिर वापस आएंगे, फिर gates में in the मतलब the walled city's gates, we'll have to issue nakabandis that will slow them down. There's no way they're going to make it back by 2 o'clock. This gives us a reason to arrest them. So British लोगों ने क्या किया? They essentially looked at the city of Amritsar and weaponized the city itself for their own purposes. Okay, so when these riots and these activities and things broke out, you can imagine the kind of unrest that was happening at the time. और गांधी जी बोल रहे थे सत्याग्रह, पैसिव रेजिस्टेंस जो भी है, but human nature is that even if you are protesting in so-called a peaceful manner, chances are that it is going to turn violent. Interesting. ये माइल्स अर्विंग जो आप बोल रहे हैं, ये कौन थे? तभी के टाइम पे अमृतसर के बेसिकली कौन-कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेन की फिगर्स थे, उनके बारे में खाली बेसिकली नाम और उनकी क्या पोजीशंस थी वो बता देंगे तो देन वील आई थिंक yes. So Michael O'Dwyer was the Lieutenant Governor of Punjab. That is the highest authority. Yeah, that is the highest authority. तो उनकी नीचे काफी मतलब let's just call them law and order keepers थे. Sometimes colonels, sometimes generals, sometimes officers, so forth. So Miles Irving was the deputy commissioner of Punjab, and he was specifically posted in Amritsar, looking after Amritsar. Lahore में कोई और थे,
दूसरे शहरों में कोई और थे, right? And there was a Captain Massey under him who was looking after the law and order, and there was a Mr. Plomer who is the Deputy Superintendent of Police. So under these people, you could say these three were the main Amritsar authorities. Right? Now, ये जो है जो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, the banks burning down that particular day, there was particular unrest amongst the British because they felt that Captain Massey, who was supposed to be supervising the state of affairs and keeping things calm, he had been a failure. So then they brought on a Major MacDonald. He was called from Lahore. Major MacDonald came in from Lahore, and he a few days later brought with him, or was ordered to bring in, about 600 troops. Because it wasn't exactly a state of emergency, but de facto. To control the situation. Bilkul. And when this kind of thing was happening, the Indians themselves were getting unnerved कि troops को क्यों बुलाए? इतने सारे, हाँ. The way we are supposed to be protesting peacefully. गांधी जी बोल रहे कि ये सत्याग्रह, कीजिए, लेकिन ये तो आर्मी ट्रूप्स लेके आ रहे हैं. Now, जिस दिन वो funerals हुए थे, right? Some of the families hired lawyers who went to the Deputy Commissioner, Miles Irving, and उनको कहा था हाथ जोड़ के कि देखिए, we need to do these funeral processions. How can you tell us that not more than 4 people can go? Our families are only so big. So then he increased the size for the Muslims only to 8. You can have 8 people. Now, in an average Muslim family, there's already 8 to 10, or 8 to, you can say 12 people, and those are males. It's usually the males in the funeral processions. But he staunchly said no. Now, Major MacDonald, जो उनके नीचे थे and जो लाहौर से आए थे, he believed that if we don't allow the people to have these funerals, which is such obviously an important thing, it goes without saying, of course, then there's going to be even more unrest. We have to respect their values, we have to respect their traditions, we have to respect their religions, we have to let them mourn, and in the right way. For that, he then got flack from the other British people. Internally. बिल्कुल, कि ये मेजर मैकडोनाल्ड जो है, उनको हम लेके आए थे to quell this, क्योंकि Captain Massey was not good enough, his work was a failure, but let's declare him also a failure. So then they brought in somebody else called Lieutenant Bainan, so they kept trying कि किसी और को लेके आओ, किसी और को लेके आओ, किसी और को लेके आओ. बट ये इतने छोटे स्पेस और गैप में 2 हफ्ते के गैप में उन्होंने इतने सारे चेंजेस किए. 2 हफ्ते भी नहीं, 2 दिन. This we're talking between the 10th and the 11th of April. Wow. It was crazy, outlandish के झटाक से बस ऐसे ही कुछ कर रहे बिना सोच के. And communication was not very good at all. You see, this is not a time of TV. There was some radio communication, but most people don't have radios. It's not like Cricket India, exactly. Expensive in those days to have exactly. By the time a newspaper is printed, it is already a day or 2 later. So you're not getting immediate news. So the main source of news was through the Hall Bazaar ke gossip network. Word of mouth. Word of mouth. Jo aap bol rahe, right? And the Hall Bazaar was actually the main bazaar through which all of this news was coming. If you look at the city of Amritsar, it's a walled city. Right. The cities of Punjab, Lahore is similar. You've got a religious center in the middle, in this case, the Golden Temple. Lahore mein, you've got a mosque. And then you've got these bazaars that radiate outside. And then the walls that surround them. Now, the British cantonment is on the northern part. Northern and thoda east-west, but let's say northern part of the city. Outside of the walled city. And this is the same structure for all cities of Punjab, and this is intentional. क्योंकि अगर कोई हादसा, हत्या, दुर्घटना हुई, the British want to leave.
Indians will be trapped inside the city. This is just a basic, Right. you know. It's basic military or government Exactly. Very strategy. unfortunate, but this is the way they did it. Now, the Hall Bazaar was in the north, kind of nearest the cantonment area, so it would get first wind of what might be happening, Right. you know, what might be being planned by the British officers or the British government in the cantonment area near the civil lines, right? So that's why the Hall Bazaar was so important at the time. But this is how, the communication would come through. Okay. The other thing that the British were apparently trying to do to sort of keep within the law was to issue these written proclamations. लेकिन सच बात तो यही है कि proclamations तो थे लेकिन किसी तक पहुंचे भी नहीं. Right. Yeah, because तभी के टाइम पे वो अनाउंस करते थे ऐसे बाजार में जाके मैंने ऐसा भी कुछ पढ़ा है. तो they did all of that? Well, they did it in certain parts of the city. Okay. We haven't started talking about General Dyer yet, but once he came in, intentionally, in order to so-called keep within the law, he issued mostly verbal proclamation in a certain part of the city, but not in another part of the city. तो अभी फायदा क्या है? मतलब आपको ये मालूम हो गया, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उनको तो बिल्कुल मालूम ही नहीं है. And that was intentional also. So there was a lot of, if I may say, these very, very underhanded tactics that were being used to weaponize the city and just basically attack the people. Understand. तभी के टाइम का, जैसे आप लाहौर और ये सब भी बोल रहे हो, तो तभी के टाइम का खाली बेसिकली पंजाब का मैप, कैन यू जस्ट गिव अस एन आइडिया? Because अमृतसर, लाहौर, like at that time of course everything was India. Yes. तो in and around के region भी जहाँ से काफी सारे लोग जैसे फेयर के लिए भी आए होंगे, तो what are the cities that were? Yeah, so Amritsar, Lahore, these two cities are most important because they are twin cities. Right. It's hardly 20 mil ki duri between the two. So literally there was a lot of traffic, cross-border, call it cross-border traffic between the two. No, back then also. Okay. And in fact, the local Congress leaders, Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu, they were more active in Amritsar. So the Congress meetings were taking place there. So, matlab, other people from Lahore also were coming to Amritsar to take part in these Congress meetings. That was very important. Got it. तो अभी बाकी के शहर, of course, Punjab was a stronghold of the British Empire. So you've got other cities also, Jalandhar and Ambala and Patiala and so forth. But, they were perhaps maybe, although they were cantonments and although they were army officers, smaller, perhaps not as active, politically at least, as these two. Got it. Now, General Reginald Dyer was based in Jalandhar. He was stationed in Jalandhar. Jalandhar was under his command. He shows up in Amritsar hearing all of this. और उन्होंने कहा था... No, 1 second, sorry. तो मतलब उनको कमीशन नहीं किया गया कि of course जैसे ये फेलियर जैसे आप बोल रहे 2 दिन में काफी सारे लोगों को चेंज किया गया, तो then was he commissioned to come here or he just shows up? So he claimed that he was commissioned. He claimed that he received an instruction from the 16th Division of the Army. When that was looked into and researched quite deeply by scholars as well as by the British themselves, उसके बाद General Dyer के trial के समय, no such instruction was ever found. No written communication, no official order. No official order. Wow. So it appears that he just took the liberty of making a decision himself. And there was a junior officer then sent on his heels, देखने के लिए कि मतलब क्यों गया है यहाँ, क्या कर रहा है, मतलब it's not under your purview, right? But because there was this unrest, that word of mouth had spread कि Captain Massey ने ठीक से control नहीं किया, अभी है MacDonald और कुछ बोल रहा है, is Banon going to be able to control it? Miles Irving is getting more and more agitated, especially impatient, not just impatient, but unnerved and agitated and upset, especially seeing this unity at that Ramnavmi festival a few days before, कि अभी क्या है, क्या होने वाला है. And then Miles Irving had issued this threat कि अगर आप लोग नहीं सुनोगे, if you do gather,
for funeral processions or any other kind of procession. After the Ram Navami procession, that was the whole reason to not have the funeral procession, because there are no more processions. Right. Ho gaya. But he said, he issued this threat that if you do gather, then we will be forced to drop aerial bombs on these processions. So on the 11th, 12th, leading in, even on the 13th, the day of the incident itself in the Bagh, there were these planes that were seen. Right. Flying above, low-lying planes. And in fact, it is said that the meeting that was happening in Jallianwala Bagh on the 13th actually for a moment stopped. Matlab, people looked up because the planes were flying overhead, and then they dissipated. Nothing happened. Right. But this was very, very real, and nobody knew what was happening, what would happen next. But any of these chote-mote incidences that we don't know about, that we don't talk about, that we've never talked about, that are not explained in our history books, any of these could have turned into a disaster in and of themselves. Absolutely, because मैंने भी पढ़ा कि तभी के टाइम पे, but ब्रिटिश का कहना था कि वो सब रिकॉनेसेंस करने के लिए वो उड़ रहे हैं, बट आप कह रहे हो कि एक्चुअली ऐसे भी कहा गया था कि अगर आप नहीं डेसिमेट हो गए तो आपके बॉम्ब भी गिराए जा सकते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. क्योंकि they were well within the purview. अगर आप देख लीजिए राउलेट एक्ट जो है, उनके मतलब रूल्स रेगुलेशंस, they were well within the purview. Okay, so interesting. Okay, so then General Dyer comes in, वो आते हैं, and then of course because वहाँ पे everything is in disarray, because ये सब जो भी इनके पहले वाले जो officers है वो control नहीं कर पा रहे situation, तो then naturally वो automatically becomes as a guy who possibly can be authoritative hand. And then what happens on 13th April? So what happens right before 13th April is he comes in and he just takes over. He just takes over. He sets up a temporary encampment in the Rambagh. Okay. Rambagh is again now on the northern part of the city, and it's a bagh. It was Maharaja Ranjit Singh's sort of palace, at one point in time, and was a garden and बगीचा वैसे. तो जनरल डायर आते हैं और वो मतलब ये टेम्पररी एनकैम्पमेंट लगाते हैं रामबाग में. रामबाग वैसे तो बगीचा है, जनरल पार्क है जहाँ लोग ऐशो आराम करते हैं, वॉक्स जो भी. और अमृतसर को महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था कई ज़मानों पहले, राइट. लेकिन जनरल डायर वहाँ आते हैं और वहाँ अपने टेम्पररी इनकैम्पमेंट बनाते हैं और वहाँ से देखना शुरू करते हैं कि उनका स्ट्रैटेजी अभी क्या होगा. तो पहले वो निकलते हैं सड़क पर और थोड़ा बहुत कुछ दादागिरी करने की कोशिश किया, मतलब 12 तारीख को. Okay. Right? He went out into the streets और वहाँ काफ़ी लोग थे. Okay. क्या हुआ था on the 11th, 11 तारीख को, उसके 2 दिन पहले काफ़ी लोग गए थे सिविल लाइंस को माइल्स अर्विंग के घर तक. क्यों? क्योंकि 10 तारीख को, उसके 1 दिन पहले, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, ये 2 कांग्रेस लीडर जो थे, उनको अरेस्ट करके धर्मशाला भेज दिए गए. एंड क्योंकि वो पावर थी उनकी, वो मतलब लोगों को इकट्ठे कर रहे थे, बातें कर रहे थे. एक्चुअली उनको ऑलरेडी ऑर्डर इश्यू किया गया था कई दिन पहले कि यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक. Okay, but they were violating it. No, they were actually not violating it. They were actually very cleverly not violating it. तो वो चुप रहे थे, but they were encouraging others to speak. तो इसलिए माइल्स अर्विंग ने ये सोच लिया कि ये तो है प्रॉब्लम मेकर्स, हमें इनको निकाल देना चाहिए, बिल्कुल लॉक स्टॉक एंड बैरल. इसलिए उनको सिविल लाइंस अपने घर में बुलाकर अरेस्ट, गिरफ्तार कर दिया गया और उनको दोनों को धर्मशाला भेज दिया. नाउ तो इसलिए 11 तारीख को काफी लोग सिविल लाइंस क्रॉस करके माइल्स अर्विंग के घर तक मतलब चार्ज करने लगे टू प्रोटेस्ट कि उनको रिलीज कर देना.
और माइल्स अर्विंग डर गया कि ये अपना घर है और ये लोग आने लगे तो फिर अगेन डंडी, नॉट मार्च बट डंडी एक्चुअल वायलेंस, यू नो, तो बीटिंग्स एंड दिस एंड दैट, तो ये हुई. कमिंग बैक टू आफ्टर जनरल डायर आ गए, पहुंच गए मतलब अमृतसर में, तो वो सड़क पर निकलने लगे, थोड़ा सर्वे करने लगे और कई लोग थे. एक आदमी था जिसका नाम था रट्टो. He was called Ratto, Mahashay Ratan Chand, actually. Okay. He had organized the Ram Navami procession 2-3 दिन पहले. तो मतलब उनको वो गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वो है कहाँ सर्च पार्टी, नॉट एक्टिव सर्च पार्टी लेकिन सर्च पार्टी थी. मतलब उनको देख तो जनरल डायर आउट ऑन द स्ट्रीट विद हिज पीपल, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो दादागिरी कर रहा है, वो बोल रहे लोगों को कि कौन हो तुम रट्टो हो. Just somebody else who is perfectly मतलब somebody not else, him, not him. And out of force तुम रट्टो हो, arrest him. And दूसरे लोग बोल रहे कि नहीं ये रट्टो नहीं है, ये सोमदत्त है, he's a lawyer, he's you know perfectly respectable man, जो भी. But ये this is the kind of thing that he was doing. फिर this is all on the 12th. तो घर जाके फिर he issues this proclamation जो verbally that he has given कई जगह में और दूसरी जगह में नहीं. Right. He also printed something up, you know, that was then distributed कई जगह में, दूसरे जगह में नहीं. Right. This is all on the 12th. and फिर एक कर्फ्यू इशू किया गया कि सभी लोगों को 7 बजे तक घर में जाना है, and the curfew is in effect until the next morning. Okay. Next morning proclamation ने क्या कहा? Again, no gatherings, no meetings. If you meet or if you gather, we can arrest you. And now they know full well कि वैसाखी के दिन है. People The festival. exactly इकट्ठे होने वाले हैं. दूसरे provinces से ये लोग आ रहे हैं क्योंकि it's a horse and cattle fair. और but they were focused on that meeting. वो 4 बजे या 4:30 बजे की मीटिंग. बट ये जो मीटिंग थी फिर वो जो जलियांवाला बाग में थी, दैट वाज आल्सो प्रोटेस्ट करने के लिए भी कि दैट वाज जस्ट अ जनरल मीटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? इट वाज अ कांग्रेस फॉलोअर्स मतलब कांग्रेस पार्टी मेंबर्स मीटिंग. ओके. एंड काफी चीज मतलब हो रही थी दैट दे वांटेड टू डिस्कस. एक तो है कि लीडर्स को अरेस्ट किए गए हैं, छुड़ाना कैसे. अभी हमने कोशिश किया 1-2 दिन पहले, लेकिन वो हम सफल नहीं हुए. तो अभी क्या करना चाहिए? अभी ये सत्याग्रह हड़ताल जो है, हड़ताल जो गांधी जी इज कॉलिंग फॉर हड़ताल, स्ट्राइक्स इन द शॉपकीपर्स, वो काफ़ी सक्सेसफुल है. लेकिन शुड वी डू मोर, शुड वी यू नो, अभी गांधी जी भी आए थे कुछ दिन पहले, but they had stopped him at the border of the province and had sent him back to Bombay. Same way, they had captured Dr. Satyapal and Dr. Kichlu at Miles Irving's house because it was near the province and क्योंकि they could just quickly get them out of the province at Dharamsala, get them away. तो ये सब डिस्कस करने के लिए ये लोग मतलब ये मीटिंग कर रहे थे बाग में. तो तरह की चीजें, you know, it wasn't necessarily one protest, but there was all these problems. And ये जनरल डायर ने क्या सोचा और ब्रिटिश लोग, माइल्स अर्विंग, सभी इतनी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि ये लोग मिल रहे हैं, जैसे मिलेंगे इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. तो it was with this view that General Dyer planned all of this. He knew they were going to gather in the Bagh that day. And हजारों लोग, we still don't know. I was just going to ask, numbers. Some say there were 5,000-6,000 people in the Bagh that day. दूसरे रिपोर्ट्स बोलते हैं कि 10,000 से ऊपर थे. When you look at the number of casualties from Jallianwala Bagh, official numbers are 379. Right. Unofficial numbers are 1,000, 2,000. अभी आप 1 मिनट के लिए अगर आप सोच लोगे कि 9/11 में
3,000 लोग की हत्या हुई थी उस दिन 9/11, so many years later with planes and ये and war. Think about with none of that in 1919, maybe 2,000 people died, maybe unofficially. So interesting. तभी जो जलियांवाला बाग का मतलब जैसे मैं पढ़ रहा था जलियांवाला बाग के बारे में भी ऑफ कोर्स मैं विजिट भी किया है द गोल्डन टेम्पल बट अनफॉर्चुनेटली तभी जलियांवाला बाग बंद था बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज टू 26 जनवरी तो इसीलिए उसे बंद रखा था ऑनेस्टली कैसा है जलियांवाला बाग का लेआउट इन टर्म्स ऑफ बिकॉज मैंने सुना है कि उसके बारे में भी कुछ प्लान है बिल्कुल बिल्कुल सो जलियांवाला बाग was an open ground. बाग नहीं था, बगीचा नहीं था, बस ऐसे ओपन ग्राउंड, राइट घास भी नहीं था उस वक्त, यू नो, राइट और वो ग्राउंड जो है was given to ये लोग from the village of Jalna by Ranjit Singh. That's how it came to be called Jallianwala Bagh. तो it was a walled enclosure, दीवार थे सभी जगह और एक ही मतलब बहुत ही नैरो सड़क गली जो आप बोल सकते हैं जो एंट्रेंस भी थी और एग्जिट भी दोनों तो देयर इज ओनली वन वे इन एंड वन वे आउट तो देन अदरवाइज द दीवार इज अबाउट 6-8 फुट टॉल आई थिंक इट्स अबाउट 8 फुट टॉल सो जब ये हत्या हुई थी तो आप सोच सकते हैं कि लोग बाग के अंदर मतलब कैप्चर थे ऑलरेडी दे वर सेलिब्रेटिंग हैविंग द मीटिंग जो भी है राइट जनरल डायर को मालूम ही था और उसको उनको ये भी मालूम था कि वही एंट्रेंस से मैं आऊँगा मैं अपने फौजी लोग को लेकर आऊँगा लेके और उनको मतलब लाइन अप कराऊँगा लोग निकल ही नहीं सकेंगे क्योंकि वही एक एंट्रेंस है वही एक एग्जिट है अगर मैंने ब्लॉक किया हम लोगों ने ब्लॉक किया तो कैसे निकलेंगे तो दिस वाज प्लान्ड इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इसलिए जब उन्होंने गोलियां चलाना शुरू किया देन पीपल वर जस्ट स्क्रैम्बलिंग एक वहां मतलब वेल है बहुत ही मशहूर है तो कई लोग दे स्टार्टेड जंपिंग इन द वेल नॉट दैट दैट्स अ मेथड ऑफ एस्केप बट जस्ट टू एस्केप द बुलेट्स कई लोग दीवार चढ़ने की कोशिश किया अनसक्सेसफुली स्केलिंग द वॉल्स तो you know they started falling एक के ऊपर दूसरा दूसरा के ऊपर तीसरा and then many people started dying not even from bullets but from suffocation stampede भीड़ भाड़ जो है तो ये this is how the you know go from those official results to the unofficial results क्योंकि so many people died not just because of bullets but because of these other reasons right you know so this is the layout it is a walled enclosure it is not a garden or anything called bagh but it's not a bagh that way you know and there was no way out तो अभी अगर आप जाओगे जलियांवाला बाग को तो they have मतलब it's now a center of tourism to really explain to the people about ये हत्या जो है आप देख सकते हो कि ये मतलब एंट्रेंस एग्जिट कहाँ है वो नैरो गली कहाँ है दीवार मतलब कितनी ऊंची है वो जनरल डायर के बुलेट्स उनके फौजियों के बुलेट्स के दाग अभी तक हैं दीवार पर जो आप देख सकते हैं वो वेल जो है आप देख सकते हैं अभी उन्होंने इंक्लोजर बनाया सब कुछ और वहाँ एक बहुत अच्छी पार्टीशन म्यूजियम भी है जहाँ ये पूरी हिस्ट्री एंड द हिस्ट्रीज ऑफ द मतलब you know families of Punjab who've come from partition Lahore Amritsar connection and beyond that also उन सभी लोगों की मतलब records हैं it's a lovely partition museum so today it's of course a very different kind of thing of course yeah तभी के टाइम पे काफी अलग था but ये numbers के बारे में आप बात कर रहे हैं तो काफी interesting है because I just quickly मुझे ये numbers पे जरा referencing करनी है और फिर I want to bring you back actually to a little bit earlier time because जो मैंने भी पढ़ा वो उनके later on जब भी inquiries हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि close to 1800 or 1900 odd bullets they fired and वो भी फिर उन्होंने बंद कर दिया because they realized कि उनकी bullets खत्म होने वाली है so इसीलिए they stopped so if even by that count अगर आप 1800 bullet भी अगर चला रहे हैं assuming that less maybe like 10% अगर नहीं लगी
तो फिर भी एटलीस्ट 1500-1600 लोग की तो, एंड अगर वो रेंज में आप फायर कर रहे हो विद द कैलिबर बुलेट्स दैट दे शॉट, दैट एक्चुअली हैज, आई मीन बिकॉज हमारा डिफेंस में भी काफ़ी बैकग्राउंड है, हमने काफ़ी कॉन्वर्सेशंस की है, तो दैट वन बुलेट कैन लिटरली पियर्स टू 2-3 पीपल ऑल्सो. बिल्कुल बिल्कुल. And what is a shame, what is the biggest crying shame when you think about it, वो soldiers जो थे, वो फौजी जो थे, mostly Gurkha soldiers. Yeah, I was actually going to ask who are the soldiers who were actually brought in General Dyer से, और ये क्यों, ये specific regiment क्यों बोली थी? Actually, well known बात है कि Sikhs and Gurkhas were recruited actually very specifically by the British to join the British Army. तो World War I में, the Great War उस वक्त, World War I, और उसके बाद में World War II में भी, it was actually British Army जो है fighting against France, ये वो, all these other countries, even in World War II, अपने Indian soldiers हैं. And largely Sikhs and largely Gurkhas, they used to go out क्योंकि एक तो ये हट्टे खट्टे लोग हैं, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ज़्यादातर मतलब एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब रूरल सोसाइटी से आते हैं, so we can offer them much more, give them a better pension, remuneration वगैरह, then they can get sort of living in these rural areas. So it was a big incentive for them. Interestingly enough, जब गदर मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो it was these very soldiers, Sikhs and Gurkhas primarily, who were either thrown out, या तो उन्होंने मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने छोड़ दिया, या तो they were retired, और मतलब देश के सीमा छोड़कर settled in these other countries, and they're planning the Gadar movement. Which is why in a place like America, California में, Washington, California, these states, you have a very, very large population of Sikhs, especially Punjabis, but especially Sikhs, Sikh American community. काफ़ी उन्होंने Mexican से शादी किया वगैरह, because these were the very first Indian immigrants to the US. Why? For the purpose of planning the Gadar movement. Oh. A little known fact. Right. That's so interesting. Great. I want to bring you back अपना जो regiments थी, and regiments के साथ में भी जब भी हम जलियांवाला बाग के बारे में बात कर रहे हो, तो there's also something called the crawling punishment which also comes in. What is that about? तो 1919 में जनरल डायर की ट्रायल जो है वो नवंबर महीना में मतलब शुरू हुआ, and it went on for several months after that. वहाँ से उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस किए गए. Was this right? Was this done? Martial law was established in Amritsar and in Punjab for a good 2 months after the Jallianwala Bagh massacre. तो उस वक्त ये माइकल ओडवायर ने ये इशू किया ये डिक्री, क्योंकि ये एक स्कूल टीचर थी, ब्रिटिश स्कूल टीचर मिस शर्वुड, जो अपने साइकिल चला रही थी अमृतसर में एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब जा रही थी स्कूल से घर या ऐसे कुछ, एंड उन दिनों में, एंड उनको मतलब साइकिल से गिराया दिया गया और लोगों ने उनका हादसा किया because of this unrest. And this is after the this was before in the days before the Jallianwala Bagh massacre. Okay. Lekin because this happened, so martial law was put into effect for 2 months right after. तो माइकल ओडवायर ने कहा कि वो गली जो है जहां उनका हादसा हुआ है, वहां we are going to block it out, and if anybody wants to cross, they have to crawl on their bellies. तो if you look, अगर आप देखोगे भी इंटरनेट पर horrible pictures कि लोग यहाँ से वहाँ तक जाना चाहते हैं and they are being made to crawl on their bellies. This was the crawling order, and it was in effect for a good few months during those 2 months of martial law. After that, real dire injustice, demeaning.
Wow. Okay. So then coming to 1313, अभी of course everybody is assembled. जनरल डायर वहाँ पहुँचते हैं primarily with Sikhs and Gurkha regiment. But Sikh regiment अगर थी तो weren't they like a little क्या बोलते हैं उसको, उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट नहीं हुई कि तो it actually for Jallianwala Bagh, very strategic. It was mostly Gurkhas. okay It was mostly Gurkhas. There might have been a few Punjabi Sikhs, but it was mostly Gurkhas. Again, for this very reason. He had understand planned it. right so वो आए वहाँ पे of course they mounted on and they started shooting कहते हैं कि जनरल डायर के साथ उनके भी एक कोई डेप्यूटी ऑफिसर थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया फायर करने के लिए बिल्कुल. There was a junior level officer who had come with him and वो हिचकिचा रहा था naturally. क्योंकि ये अपने ही लोग, you know, अपने ही लोग पर, मतलब he is British, but फिर भी गुरखा सोल्जर्स जो अपने ही लोगों पर, मतलब ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि चलाओ गोलियां on a day of celebration. Vaisakhi Spring Fest, a day when people should be happy and celebrating and they're playing in the baag. बच्चे आए हैं, families आए हैं, परिवार आए हैं. You know, Amritsar and Punjab in general, it's not the kind of city ke, you know, with the Punjabis being quite conservative, जो मतलब you see a lot of ladies out. It's not just, you know, it doesn't happen like आज तो maybe it's different. of course लेकिन उन जमानों में it's not like ladies and girls and easily families ऐसा would like इतना exactly floating around freely वैसे तो. But on Vaisakhi Day, families are out, बच्चे खेल रहे हैं, you know, innocent lives. तो इसलिए वो जरूर हिचकिचा रहे थे. And he was junior to General Dyer. So again, now उसके पहले Major MacDonald had said, remember 2-3 दिन पहले कि we must allow them to mourn, we must allow them to have their funerals. नहीं तो there's going to be even more riots and upset and violence, right? तो उसको भी blacklist किया गया. So anyone who was basically refuting these diabolical commands of General Dyer or anybody else were getting blacklisted for no reason. ये जो फायरिंग थी वो कितने मिनट्स या कितने टाइम तक चली करीबन 11 से लेकर 15 मिनट तक. अभी कई रिपोर्ट्स बोलते हैं 10 से लेकर 15 मिनट, कई रिपोर्ट्स बोलते हैं 10-12 मिनट. मेरे मन में लगा हुआ है 11 मिनट. तो मतलब इतनी देर तक फायरिंग चल रही थी. अगर आपने वो मूवी देखा है गांधी, the movie Gandhi, yes. which is about Gandhi, right जी, and वहाँ there is one scene dedicated to the Jallianwala Bagh massacre, which shows कि जनरल डायर कैसे आता है, मतलब बाग में है, लोग इकट्ठे हैं, मिलजुल रहे हैं, फिर जनरल डायर आते हैं अपने फौजी के साथ. पूरा मतलब वो इनैक्टमेंट अगर आप देखो, वो सीन 7 minutes है in the movie. It's a very, very long scene for a movie, and that is 7 minutes. तो अभी आप सोच लीजिए, and you're fully immersed in it. You feel, you know. Yeah, it's quite touching. Yeah. तो अगर आप सोच लीजिए तो that was 7 minutes. ये 11 से लेकर 15 मिनट. So interesting. Okay, so ये basically फायरिंग हुई. उसके बाद का मतलब वहाँ पे सिचुएशन और सीन कैसा था, जो लोग अपने आप को बचाने के लिए बेसिकली क्या क्या कर रहे थे? ओह माय गॉश. तो लोग बस इधर से उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, भीड़ लग गई थी, स्टैम्पीड, एक दूसरों के ऊपर गिर रहे थे, सफोकेट हो रहे थे. काफी लोग बच गए क्योंकि मतलब वो नीचे आ गए, दूसरे लोग उनके ऊपर मतलब गिर गए, लेकिन उनको गोलियां नहीं लगी. एंड समहाउ they didn't suffocate either, so they were saved. लेकिन दूसरे लोग हैं जो because of the same reason suffocation से मर गए. So it was very, very upsetting actually, and it took 1-2 दिन के लिए to clear everything out, to take all the bodies out. And the sight outside Jallianwala Bagh in the day or two after that was very deeply touching. Actually,
लोगों के चप्पल हम्म, जूते जो थे, दे हैड गैदर्ड, इकट्ठे किए, जो लोग मर गए मतलब हम्म, उनके चप्पल और जूते को मतलब इकट्ठे कर दिया अथॉरिटीज ने या किसने, एंड दे वर स्टैक्ड अप आउटसाइड द एंट्रेंस ऑफ द बाग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया अपने देश में wow, लोगों के पास फुटवेयर नहीं है उन जमानों में, so they were going to redistribute those chappals to people who didn't have chappals. And I remember this site has been talked about and carried down through word of mouth. And if you think about it, it's a real morbid visual that stays with you and has stayed with many people. wow. That is, I mean, that is deeply एक तरीके से touching and Disturbing. दूसरी तरीके से disturbing and even so funny that जो लोग अपने चप्पल वहाँ पे या तो निकलने की कोशिश में छोड़ गए, जो लोग अनफॉर्चुनेटली वहाँ मारे गए, एंड फिर बिकॉज इतनी ऐसी स्थिति थी 1919 में कि वहाँ पे उनके चप्पल बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लोगों के लिए, बिकॉज लिटरली पहनने के लिए चप्पल नहीं है। नहीं, exactly. Actually. That's this shows the sorry state of affairs of that time. Right. So ये हो गया, फिर बाद में उसके दिन नेक्स्ट दिन फिर हल्ला गुल्ला हुआ सबको, of course did papers report it? Papers did report it. Papers absolutely did report it, but not to the extent of the truth. Okay. Immediately. Okay. The truth तभी निकला जब जनरल डायर की ट्रायल्स शुरू हुई. Okay. Which was not until November. Right. क्योंकि हल्ला गुल्ला तो हुआ था मतलब 2-3 दिन बाद, फिर मार्शल लॉ, तो हल्ला गुल्ला हुआ इसलिए देयर वाज मार्शल लॉ, तो और हल्ला गुल्ला होने की मतलब मौका ही नहीं थी. So everything was clamped down upon. As you can imagine, April to May, June तक, and it wasn't until November when the truth starts to come out. तो ये ट्रायल कैसे शुरू हुई? Because कैसे it was called, लोग चाहते थे कि जरूर उनको सामने लेके आना चाहिए, देखना है, क्योंकि उनके मन में क्या हो रहा था, क्यों किया ये, और कैसे जस्टिस मतलब उनको needs to be prosecuted. हाँ जी बिल्कुल दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब दुर्घटना हुई, लेकिन इट्स नॉट अ दुर्घटना वैसे, उन्होंने इट वाज अ प्लान्ड टेररिस्ट अटैक. Right. एंड बहुत ही लोग उस वक्त, बहुत ही लोग मतलब ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो साफ साफ बिल्कुल नहीं बोल रहे थे कि ये मतलब बुरी दुर्घटना हुई है. ब्रिटिश लोग जो थे उस वक्त बिल्कुल बोल रहे थे कि ये बिल्कुल विद इन द लॉ है, jurisdiction to अपनी jurisdiction. what he did. Okay. Yeah, what he did is absolutely within the law, within the jurisdiction. लोग बोल रहे थे उसके पहले, मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर के पहले, ना दलील, ना वकील, ना अपील, ये थी मतलब द वॉर क्राई अगेंस्ट द राउलेट एक्ट. अभी उसके बाद भी ना दलील, ना वकील, no appeal. That, even though that was a planned slogan for the Rowlatt Act, the essence of it continued afterwards as well. And जब उनकी मतलब ये ट्रायल हुई थी, तो उस वक्त भी बहुत मतलब there was a full jury, जो आप बोल सकते हैं, देसी लोग भी थे और ब्रिटिश लोग भी थे, and they were really drilling the local officials, General Dyer, लेकिन वो तो थे बड़े ही staunch, बड़े ही मतलब like a hero, कि my purpose, उन्होंने कहा था क्या, my purpose was to inflict fear among the people of Punjab, to teach them a lesson that they wouldn't forget. तो उस वक्त के वाइस रॉय कैम्सफोर्ड, उन्होंने भी कहा था कि ये बहुत बुरी बात है जो हम लोगों ने किया है, but when General Dyer went back to the UK, he was lauded as a savior of the British Empire. Wow.
इंटरेस्टिंग. एंड जब भी एट दैट टाइम ऑल्सो जब ये हुआ था तो उसके बाद में पेपर जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले 2-3 दिन ज्यादा इतनी रिपोर्ट्स नहीं है. डिड द ब्रिटिश ट्राई कर्बिंग द न्यूज? They tried to curb the spread of the news again through issuing this martial law. ओके. Or it's all about control. राइट. अगर लोगों को हम अपने काबू में लेकर ले आ सकते हैं तो मतलब न्यूज़ स्प्रेड नहीं होगी, समाचार स्प्रेड नहीं होगी और फिर भूल जाएंगे. लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं हुआ. राइट. बट जनरल डायर जैसे आप कह रहे हैं कि वो वापस गए तो ही गॉट लॉडेड कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने सेवियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट किया है. कोई तो एक मूवी है जैसे आई थिंक केसरी 2 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें दिखाया गया है कि उनको एक्चुअली डिसऑनरेबली फिर डिस्चार्ज किया है. इज दैट ट्रू? सो ये कंटेस्टेड बात है. Oh. ही वॉज डिस्चार्ज्ड. ओके. विंस्टन चर्चिल ने कहा कि बहुत बुरा किया है, he is diabolical, he's कंडेम्ड we condemn him, ये सब. But he was never tried. He was tried in the trial. राइट. जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में, हादसा के बाद में, लेकिन he was let go. राइट. And UK में उसके बाद he was never tried. ऐशो आराम करके he lived a very nice life. Died in 1927. On his deathbed, famously उन्होंने कहा था कि I want to meet my maker to see if my maker will approve of the decisions I've made in life. मतलब उस वक्त भी he was thinking that I have done the right thing. बट फिर वापस जाने के बाद उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर नहीं बना है कि they would actually still try him over there once he went? He was This is the pure irony, and not even irony, it's just the sadness of it all. क्योंकि विंस्टन चर्चिल के बोलने के बाद भी they never tried General Dyer in the UK. Never. कई साल हो गए. Michael O'Dwyer in fact was assassinated in court by Udham Singh. That was later. और ये भी actually कई लोग बोलते हैं कि Udham Singh knew exactly that it was Michael O'Dwyer and he meant to assassinate him क्योंकि he was the lieutenant governor of Punjab. तो मतलब वो जनरल डायर के ऊपर थे. तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, there was some confusion about O'Dwyer and Dyer. तो शायद उन्होंने सोचा कि ये वही आदमी है. जनरल डायर. Yeah, that will never be known because there's stories both ways. Of course. So he was assassinated in court. फिर 100 साल बाद 2019 में UK में there was an appeal in Parliament that was actually spearheaded by the British Indians to extract an apology from Her Majesty Queen Elizabeth II, जो उस वक्त she was still alive. Because there has never been an apology for this incident. लेकिन if you Google it, you'll come up with these things in the newspapers from 2019. Right. लेकिन वो भी अंत में कुछ हुआ ही नहीं. Right. कुछ नहीं हुआ. It was just left. It's gone. Anniversary is over and no apology. It's similar to what जो काफी सारे लोग इंडियंस जैसे मांग कोहिनूर के लिए भी करते हैं. Similar one story like that where they must have pressure डाला होगा कि apology चाहिए, but of course कुछ कभी बात आगे बढ़ी नहीं वो लाइफ में. ये उद्धम सिंह जो है, ये उद्धम सिंह कहते हैं कि he was one of the survivors of the massacre. Yes. The story is that Udham Singh was a young boy who was in the Bagh that day. So an eyewitness and a survivor himself. And इसलिए वो इतना क्रोधित था that he carried this grudge throughout his life naturally. You can see where he is coming from. Right. अपने देश के लिए, I mean, there has been so much, from 1857, in our history textbooks, 1857 was
the revolution, Sepoy mutiny and so forth. तो उसके बाद the next thing we know about in terms of a revolution is the Jallianwala Bagh massacre. But that was not a revolution. It was supposed to be a series of strikes, satyagraha, Rowlatt satyagraha जो है, हड़ताल्स, peaceful protests. तो लेकिन वो peaceful protest के नाम पे this violence has erupted. क्या impact था ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट का on the independence movement? तो it was this incident that actually मतलब spurred the independence movement. इसके पहले तो as I had mentioned कि the Congress party was born. There had begun to be these discussions about the idea of home rule, Atma Swatantrata, vagera. These ideas, and these Gandhi ji had become active. Nehru was following, Muhammad Ali Jinnah, etc., and others also. But there was no sort of formal coming together. Jallianwala Bagh incident ke baad hi, it spread such fury desh bhar to all corners of India कि people really then came together to say चलो अभी समय आ गया है that we need to be independent. We need to, turn this idea of home rule into a reality. And so this actually was the one incident that spurred the independence movement, really started it. Wow. In full force. But उसके बाद में भी almost like 20-25 years लगे to actually get. Of course उसके बीच में दूसरी एक वर्ल्ड वॉर हो गई तो उसमें भी 4-5 साल काफी चले गए. बिल्कुल. But बिल्कुल. It's when you are subjugated and ruled by someone else, evicting them from that position when they have such a stronghold is not an easy thing. और ये divide and rule policy जो थी British लोगों के, that was very successful for them. And इसलिए जब वो लोग in अमृतसर उन दिनों में वो uniting राम नवमी procession, marching together, एक ही मतलब कप से पी रहे थे दिखाने के लिए कि हम सब मिलकर ही सेलिब्रेट करेंगे रामनवमी. हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं. That was to unnerve the British because it totally goes against their divide and rule policy. So interesting. What is that? मतलब ऐसी एक क्या लेसन है जो possibly हम learn कर सकते हैं out of this incident? So I think this is the biggest thing. कि we are a nation of so many different peoples and cultures and subcultures, which is a beautiful thing because it gives us a lot of diversity. But the unfortunate thing is that we do not stand together. And if you look at the history of our nation and beyond, or I should say before the fact that we were a nation, it is our not being able to stand together that has always been our downfall since times immemorial. From the earliest conquests, British लोगों के पहले, throughout अपने इतिहास, तो ये ही सबसे बड़ा टेक अवे है क्योंकि हमारे देश बढ़ने के लिए और अभी पॉलिटिकली ना भी इकोनॉमिकली जो भी है भविष्य में, we need to come together, we need to stand together. As I always say, conflict is inevitable in life. ये होना ही होना है. It is a part of life itself. Okay? So, rather than me versus you, how about us together? Because that is the strength of India. This is what we have always had but not acted upon. And this is the biggest takeaway because the Jallianwala Bagh massacre is really an example of
also peaceful protest, again, peaceful protest giving rise to violence. We need to ask ourselves कि हो सकता है, can we actually be peaceful? अभी आप आगे जाकर आप बोल सकते हैं कि under Gandhi ji, yes, we did fight our way to independence through peaceful measures, but they weren't always peaceful, right? I mean, nothing is, it can't be. Exactly, but they were largely peaceful. So when our freedoms are clamped down upon, freedom of speech, freedom of action, freedom of whatever it is, rather than getting up, it is upsetting. ये तो मैं बिल्कुल समझती हूँ और मानती हूँ और मैं भी upset होती हूँ. But rather than being upset, how about coming together to peacefully protest this, to be stubborn? गांधी जी बहुत stubborn थे. And it's that stubbornness, that persistence that gets us to where we need to be. Right. एक और मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आई थिंक मैंने पढ़ा कहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी तभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था, उसके बारे में बताइए. बिल्कुल बिल्कुल. रविंद्रनाथ टैगोर जी नाइटेड थे, ही वाज अ नाइट. सो तो ये जलियांवाला बाग हत्या के बाद ही वाज सो डीपली अपसेट कि ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड. उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ये, मतलब ordained by the British Empire. This is no, you know, this is no kind of honor for me. So he renounced that title. जिन्होंने atrocity की है इंडियंस के ऊपर, उनसे ये टाइटल नहीं चाहिए. बिल्कुल. Wow, so interesting. I actually did not know कि पहले वो knighted थे, बट जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि वो knighted थे and he renounced the knighthood. And also कितनी अच्छी बात है ये कि जितने भी लोगों को उनके बारे में टेक्निकली पता है, एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में या इन द हिस्टोरिकल बुक्स, इट मस्ट हैव बीन सच एन इम्पैक्टफुल रिनाउंसिएशन, बिकॉज कहाँ पे भी आपको पता नहीं चलता है कि ही एक्चुअली वाज नाइटेड एंड देन, बिकॉज एवरीबडी नोज हिम एज रविंद्रनाथ टैगोर. बिल्कुल. एंड अ ग्रेट पोएट. नोबडी एवर नोज हिम एज सर रविंद्रनाथ टैगोर. Exactly, yeah. So interesting. Great. Great. I mean, just एक दो क्लोजिंग थॉट्स. ऑफ कोर्स आपने इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बुक भी लिखी है जिनका नाम है वर्मिलियन हार्वेस्ट. ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा लोगों को बुक के बारे में बताना नहीं चाहूँगा. आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप जाइए और पढ़िए उसके बारे में, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है. एंड इसी बुक की वजह से आपने ये सब काफ़ी रिसर्च की है. एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, जितनी हमने भी बात की, मतलब इट्स ऑब्वियसली बहुत सारी डिटेल रिसर्च है, तो उसमें और भी इंसिडेंट्स शायद आपको उनको पढ़ने भी मिले. सो दैट्स ग्रेट. थैंक यू. एनी क्लोजिंग थॉट्स अगर आपके? जस्ट एक ही बात, वर्मिलियन हार्वेस्ट, ये नाम जो है किताब के लिए मैंने क्यों चुना, हार्वेस्ट बिकॉज जैसे मैंने कहा था, it was Vaisakhi that day, Spring Harvest Festival. Right. And what happens in spring, matlab the colors come out, right? Vermilion is supposed to be the color of life and the color of blood, and blood is life. But मेरे लिए बहुत ही metaphoric था, क्योंकि it's the color of life, but blood was shed that day. So color of blood means something different. तो इसलिए मैंने ये नाम चुना, Vermilion Harvest. I thought it was very appropriate and metaphorical on many levels. So, just to point that out. But मेरे लिए, सभी लोगों के लिए, बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही पर्सनल बात है. मतलब अपने इतिहास में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, and everything is, different things are personal for different people. But because this happened for me, you know, in Punjab, in Amritsar, where my ancestors are from, and I've heard personal stories, you know, about this incident and other incidences relating to it. It became very personal for me. Also because, जैसे मैंने कहा था कि ये एक ही दुर्घटना थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को स्पर किया, शुरू किया. मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत इससे हुई. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रियली ट्राई एंड रैशनलाइज इट, मेक सेंस ऑफ इट. जो आपने कहा था, व्हाट आर द टेकअवेज एंड व्हाट can we explain to our
future generations, to Right. get them to understand this very important piece of history that shouldn't be forgotten. Absolutely. And I hope कि ये मतलब conversation से काफी सारे लोग को पता चले, because I mean I think especially आगे की generations जो आती हैं, it's very natural and very normal for us also, जो ये generations के हैं, 100 साल 150 साल पुरानी बातें मतलब आपके दिमाग में instantaneously नहीं आती है. So that's why I think ऐसे conversations are conversations which hopefully create or leave a lasting impact, उस हिसाब से कि इतनी important piece of historical uh, evidence, so as to say, उसके बारे में ज़्यादा लोग को पता चले. And it's very important that they know कि people have bled for us to have this level of freedom, because I think आज के generation या even generally, I think anybody who's been part or born in independent India, Yeah. I think they would not even, I mean, the concept is so alien बिल्कुल. that you were slaves or you were actually governed or ruled by some other country, so as to say. Great. Thank you so much for such a lovely conversation. बहुत मजा आया. And yes, please go and check the book out as well. And thanks. Thank you, Bhavya. Thank you so much. बहुत ही मजा हुआ.